A very good morning, 6th class. Today we will cover Digi for your history book, chapter number 3, 4, in the earliest city. ठीक है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज हम इसकी जो है दूसरी क्लास कवर करेंगे. देखो, तो हमने देखा था ना कि जो हमारी ओल्डेस्ट सिटी है, सबसे जो है स्टार्टिंग की सिटीज में से एक है आपकी हड़प्पन सिटी. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे जो है हड़प्पन सिटी में क्या क्या होता था, क्या कैसे वो ग्रो किया, कैसे ग्लोरी करी और कैसे डिक्लाइन यानी कि कैसे फिर वो जो है खत्म हो गया. ठीक है. The Harappan civilization is believed to have thrived from 2600 BC to 1900 BC. The lost cities of this ancient civilization extend from Harappa in the northwest to Lothal in Gujarat. The Harappan civilization is also named after a river that flows through it. Can you guess the name of this river? The Harappan civilization is also known as the Indus Valley civilization because the main cities of this civilization are located around the river Indus. तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा था जो इंडस रिवर है जो कि इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान की साइड जाती है. तो इस रिवर के साथ में जितनी भी जो है सिविलाइजेशन हुई उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इंडस नदी के किनारे ही सिचुएटेड थी. ठीक है. The land around the river Indus was very fertile. This made it an excellent place to plant crops and build cities. Besides, the Himalayas in the north would safeguard the Indus Valley from violent winds. Like the cities of today, the ancient Harappan cities were well planned. They had advancements that one might consider unthinkable for such an ancient civilization. It was the people and their innovations that made the civilization great. The Harappans played different roles that contributed to the glory of the civilization. The rulers took great care to plan the city. They oversaw the city. The scribes wrote important messages on seals and other material. The Harappans had developed their own script. Trained specialists polished beads, bangles, earrings, necklaces, and other ornaments. Harappans might have travelled far and wide to obtain the metals used to create these ornaments. स्टूडेंट्स, हमने जो है देखो ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना कि कैसे जो स्पेशलाइज्ड लोग होते थे वो ही जो है अपने अपने अलग अलग फील्ड के काम करते थे. जैसे अभी हमने देखा कि ये जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं, वो कौन लोग बना रहे हैं, जो गहने बनाने में जो है एक्सपर्ट हैं. और वो गहने बनाने के लिए सामान जो है जैसे कि आपके ये बीड्स हो गए, स्टोन्स हो गए, इनको जो है बहुत दूर दूर से लाते होंगे. The weavers wove cloth from cotton
by using spindles. The Harappans might have grown cotton. Some craftspeople worked with metal and created beautiful statues and figurines and pots. Other craftspeople worked with stone and clay. ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब जो है क्ले से बनी हुई चीजें है, जैसे टॉयज वगैरह है ना। तो ये क्या है, ये कौन बना रहे हैं, जिनको क्ले का काम आता है, जो क्ले के चीजें बनाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ये देखो क्ले के कितने सारे जो है टॉयज बना रखे हैं। And made beautiful pots and terracotta toys in the workshop. Some vehicle-shaped toys were found by archaeologists. This indicates that the Harappans used bullock carts as a mode of transport between the city and farms. देखो स्टूडेंट्स ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे बुलक कार्ट्स के जो हैं टॉयज मिले हैं, मतलब गाड़ियों के शेप के जो है टॉयज मिले हैं। तो इससे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चलता है कि उस जब ये खिलौने बने हुए हैं गाड़ियों के शेप के, तो ज़रूर उस टाइम में लोग जो है बुलक कार्ट से, यानी कि ये जो कार्ट है जिसमें बैठ के जा रहा है, इन चीज़ों में जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते होंगे, और इसी के शेप के जो है वो टॉयज बने हुए हैं। Also, Harappans probably had an irrigation system because the region did not receive enough rainfall. Also, toy models of plows were found, indicating that the Harappans probably plowed fields. उसी तरह देखो स्टूडेंट्स, हल के जो है खिलौने मिले हैं, यानी कि ऐसे जिसमें ऐसे छोटे छोटे टॉयज मिले हैं जो कि ये जो प्लो होता है, हल होता है, इसके शेप के मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में लोग जो है हल चला के खेती करते होंगे। Harappans grew crops like wheat, pulses and rice and reared animals. It is also possible that they caught fish and hunted wild animals. This flourishing Harappan civilization came to an end around 1900 BC. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सभ्यता थी, ये कैसे जो है डिक्लाइन हुई, कैसे ये धीरे धीरे खत्म हो गई। How it ended is a mystery. Of the many suggested reasons, the most popular is that Aryans violently entered this region and overthrew the people. Another suggested reason is that soil erosion and the drying up of water resources caused their downfall. स्टूडेंट्स ये क्या रीजन बता रहे हैं कि क्यों ये हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होगी, या तो जो है किसी ने इन्वेड कर दिया होगा आर्यंस ने, यानी कि यहाँ पे हमला कर दिया होगा और यहाँ पे अपना शासन बना लिया होगा, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है ड्रॉट आ गया हो, यानी कि इस तरीके का सूखा पड़ गया और फिर लोगों को जो है खेती नहीं हुई होगी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई होगी। Some archaeologists suggest that the river Indus began to change its course. This resulted in flooding and destruction of the civilization. दूसरा तर्क ये माना जाता है, क्योंकि अभी तक हमें क्लियरली नहीं पता है कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, तो ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट करते हो सकता है इंडस नदी में जो है बाढ़ आ गई हो, क्योंकि उसने इंडस रिवर ने अपना कोर्स जो है चेंज कर लिया था, तो हो सकता है इंडस रिवर में बाढ़ आ गई हो और ये पूरी जो सिविलाइजेशन है इसमें बह गई होगी।
अब हम स्टूडेंट्स रिकैप करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डेमोग्राफिक्स देखते हैं सबसे पहले। डेट्स 2600 से लेके 1900 BC के बीच का ये पीरियड है जब ये सिविलाइजेशन होती थी। मेजर सिटीज कौन कौन सी थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो और लोथल थी। ठीक है। रिवर इंडस फ्लोज थ्रू द सिविलाइजेशन। रिवर इंडस के जो है किनारों पे ये सिविलाइजेशन जो है ग्रो हुई थी और इंडस रिवर भी यहाँ पे फ्लो होती थी। हिमालयन रेंज इज टू द नॉर्थ, यानी कि हिमालयन रेंज कहाँ पे पड़ता है सिविलाइजेशन के? नॉर्थ में। ठीक है। एडवांसमेंट देखते हैं। क्राफ्ट क्रिएटेड, टॉयज, ज्वेलरी, क्लोथ एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे फाउंड आउट हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस तरीके के क्राफ्ट्स यहाँ पे जो है बनते होंगे। स्क्रिप्ट क्रिएटेड विद राइटिंग डन बाय स्क्राइब्स, यानी कि स्क्रिप्ट क्या होती है? लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो कौन लिखता था? स्क्राइब्स उनको अपनी भाषा में जो है तब की जो भाषा थी उसमें लिखते थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अभी हमने देखा क्योंकि हमें बुलक कार्ट्स के टॉयज मिले हैं, है ना, ऐसे टॉयज जो कि बुलक कार्ट की शेप के बने हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ के लोग जो है बुलक कार्ट्स को यूज करते होंगे। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम, यहाँ पे क्या था? अच्छा तो लोग खेती करते थे और इरिगेशन की फैसिलिटी कहाँ से यूज करते थे? वो इंडस रिवर से। अब ये डिक्लाइन कैसे हुई? इसकी जो थ्योरीज हैं वो क्या क्या बताती है, कैसे खत्म हुई? आर्यन इन्वेजन एंड डिफीट ऑफ हड़प्पन। हो सकता है आर्यन जो थे उन्होंने यहाँ पे जो है हमला किया हो, यहाँ पे जो है वो घुस गए हों और उन्होंने जो है हड़प्पन को हरा दिया हो। या फिर हो सकता है सॉइल इरोजन एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हो सकता है पानी के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए हों और सारी मिट्टी जो है सूख गई हो, सूखा पड़ गया हो और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और धीरे धीरे लोग मर गए और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है आपकी ख़त्म हो गई। तीसरा जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हो सकता है यहाँ पे फ्लड आ गए हो ड्यू टू द कोर्स चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस का जो है कोर्स, यानी कि जो उसका जो घुमाव है, जो नदी का बहाव है वो चेंज हो गया हो और यहाँ पे बाढ़ आ गई हो और ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई हो। तो ये सारी क्या है इसकी, ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं। अब हम देखते हैं सिटी प्लान की, कैसे सिटी को प्लान किया गया था। ठीक है। पूरी सिटी को किस तरीके से प्लान किया गया था, घर कैसे बने हुए थे, वो सब। The Harappan civilization is believed to have thrived from 2600 BC to 1900 BC on the banks of the river Indus. These cities were well planned and their layouts were identical. Of the ancient Harappan cities discovered, the biggest is Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro means Mound of the Dead. These are images of the city today. But there was a time when Mohenjo-Daro was alive and flourishing. Let's enter the city to see what it was like more than 4,000 years ago. Like all ancient cities of Harappa, Mohenjo-Daro was divided into two parts: the citadel on the west and the lower town on the east. The तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी वो किस तरीके से बनी हुई थी? एक साइड तो जो है सिटीडेल था और दूसरी तरफ जो है लोअर टाउन था। लोअर टाउन जो है थोड़ा सा नीचे की साइड बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, जो घर थे वो बहुत ज़्यादा थे। सिटीडेल था वो थोड़ी ऊंची जगह पे बना हुआ था, यहाँ पे बड़ी बड़ी लेकिन कुछ ही बिल्डिंग्स थी। देखो कम है ना बिल्डिंग, लेकिन बड़ी बड़ी है। यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स है लेकिन बहुत सारी है। lower town on the east occupied most part of the city. Harappan cities had well-planned streets and houses. The citadel occupied a smaller area and it was built at a height.
The rulers and the wealthy lived here. Important structures like the Great Bath and the Granary were also located here. Let's take a closer look at one of the most prominent structures of the Harappan civilization, the Great Bath, which was built in the citadel area of Mohenjo-Daro. Great Bath was about 12 meters long and 7 meters wide. It was well built with bricks, plaster, and a layer of natural tar to keep the water from seeping through the walls. ये क्या है देखो स्टूडेंट्स, जो ग्रेट बाथ की हमने जो पिक्चर देखी थी, ये वो है। ग्रेट बाथ क्या था, जिसमें से नीचे उतर के स्टेयर्स जाती थी और यहाँ पे लोग जो है नहाते थे। और इसको जो है पक्की ईंटों से और टाट से बनाया गया था, ताकि जो साइड्स की जो वॉल्स हैं इनमें कोई सीपेज ना हो। ये देखो इस तरीके The pool for the public was in the middle. The granary is in the background. It was a large storage place for food crops. It had bays from where carts could enter to drop off grains. And it had ducts for air circulation needed for the stored grain. How similar do you think Hudapun houses were to present-day houses? Discuss this in your classroom. तो स्टूडेंट ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के घर आपने अभी देखे हैं, वो आज के टाइम में जो घर होते हैं उससे कितने सिमिलर हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो हाउसेज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, क्या आपको लगता है कि वो आज के टाइम के जो घर है, देखो आज के टाइम में भी क्या होता है, स्टोर रूम्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया है गलियों का, वैसे ही आज होता है ना, कि गली में से जो है एक जो है कंडक्ट जाती है और उसके थ्रू एक वो मेन होल से कनेक्टेड होती है। ये सब चीज़ें आज भी हैं। तो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हाँ, आजकल के जो घर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ हद तक जो है सिमिलर हैं। The Hudapun houses were also incredibly built. They were 1 or 2 stories high. These houses had rooms built around a courtyard. And they had wells for water. Harappans used the same size bricks, which were arranged in an interlocking style.
houses also had a bathing platform with a small drain at the side. This led into the street. Harappa had an extensive drainage system. The drains from the houses were connected to drains in the streets, and the smaller drains always connected to the larger ones. The drains had an advanced design. They were covered and sloped so that water flowed easily through them. Let us recall what we now know about Harappan cities. Harappan cities were all well planned, like the city of Mohenjo-Daro. They were divided into two parts, the citadel and the lower town. The citadel had important structures like the Great Bath and the Granary. The lower town was for the common people. The houses were 1 or 2 stories high and had a bathing area and well. The drains from houses were well connected to the streets. All of these features indicate that ancient Harappa was as advanced as some of the planned cities of the world today.